अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के दिखाएंगे सी फिश ग्रेवी करी। जी हाँ, उसका नाम है बातुकोनम। बातुकोनम फ़िश ग्रेवी करी बना के आपको दिखाएंगे, वो भी एक अलग अंदाज में और आसान प्रोसेस में। चलिए नवाब्स किचन स्टाइल में कैसे बनाते हैं दिखाते हैं। आज हम लोग बातुकोनम का ग्रेवी करी बना के दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, लेकिन इत्तेफाक से जब पैकिंग के लिए मुश्किल हो रही थी, उसका हेड पार्ट कट करके यहाँ पर पैकिंग भेजे थे। उसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे फुल फिश मंगाने की, लेकिन जब पैकिंग के लिए मुश्किल हो रही थी, हम लोग शायद उसको कट करके भेजे। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको फुल फिश दिखाएंगे। पहले इसकी कटिंग प्रोसेस देखिए।
आज हम लोग बातुकोनम रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसी ऑयल में हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। रॉ स्पाइसेस ऐड करते ही हम लोग जो पहले ही प्रिपेयर करा हुआ ऑनियन पेस्ट ऐड करेंगे। ऑनियन पेस्ट ऑयल में थोड़ा सा भुने के बाद हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ऑनियन पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह ऑयल में भुने के बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें टमाटो पेस्ट भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग करी लीव्स भी ऐड करेंगे। टमाटोस और ऑनियंस अच्छी तरह ऑयल में पकते वक्त ही हम लोग इसमें रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला। इन सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह ऑयल में भुने के बाद हम लोग इसमें टैमरिंड जूस ऐड करेंगे। जब सारे मसाले अच्छी तरह पक के ऑयल जब फ्लोटिंग करने लगता है उसी वक्त हम लोग इसमें फिश पीसेस ऐड करेंगे। ग्रेवी बॉईल होते वक्त ही हम लोग इसमें फिश मसाला भी ऐड करेंगे। रेसिपी तो परफेक्टली बन गया है। इसी को और भी मज़ेदार करने के लिए फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। माशाअल्लाह, रेसिपी तो परफेक्टली बन गया है और देखने के लिए भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इमीडिएटली हम लोग वाइट राइस के साथ डायरेक्टली सर्व करेंगे।
वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। और फेसबुक पेज पे भी हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नवाब्स किचन फेसबुक पेज पे भी फॉलो करिए। हमारी टीम को कांटेक्ट करने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक सारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।